Assalamu alaikum, dear aspirants. It's good to see you again. Today we are going to cover a lecture on Pak-India relation other than Kashmir. In my last lecture, I gave you a quite detailed purview on Kashmir. So other than Kashmir, rest of the topics we'll discuss today. I hope I am audible to you. Please let me know, anyone, whether I am audible to you or not. Walaikum Assalam. Okay, that's good. So the topics related to Pakistan-India relation, which I'll try to cover today, is Pakistan-India trade relation, especially the status of the most favorite nation are MFN nations, whether Pakistan should give this status to India or not. Then we'll discuss the water disputes between India and Pakistan and the boundary issues, which are mainly located in Run of Kutch and Siachen. And I think in 1 hour, these 4 issues are well enough. So first, have a look on Pak-India relation. Okay. Most of the time, India act against Pakistan like big brother. Okay, they should act like an elder brother, and this is a primary bone of contention, that India believe that Pakistan should act like other smaller states, other smaller Indian neighbor states. They deal with India. But Pakistan is not ready to accept the hegemony of India. This is the issue, and almost rest of the states which share border with India, in one way or the other, they accept the hegemony of India. When we talk about the India-Pakistan relations, their dialogues, Pakistan always remain willing to have a good dialogue with India, good negotiation with India, but most of the time India linked the negotiation process with the terror incidents. Okay. In 2013, Nawaz Sharif had declared that if India takes 1 step for good relation, Pakistan will take 2. We even want to put an end to the visa requirements between the 2 countries. We want peace with India, as we all know that Nawaz Sharif was too much sympathized towards India. Even there's a famous saying, more loyal than the I forgot, king, I guess. Okay. Loyal to the king, more loyal than the king. Okay. I guess, if I'm not wrong. So Nawaz Sharif was like that. Both the countries, they were nuclear armed neighbors. India has for years accused Pakistan of supporting militants and sending them to across the border in Indian part of the Kashmir. Pakistan denies arming the militants, and Pakistan point of view is that they only offer moral and diplomatic support to the Kashmiri people. The antagonism has spilled over into the other areas. Both the countries, they are facing same kind of antagonism in Afghanistan. Pakistan and India have inherited several problems requiring solution, which have strained their relation. India has been deploying its forces on Pakistan border in a threatening posture. Most of the time India did that. A couple of disputes between the 2 countries have been solved through arbitration. For instance, if we have a look on the water treaty between India and Pakistan, broke by the World Bank. World Bank was the arbitrator, and there was a consensus. Pakistan and India, they both reached on consensus on Run of Kutch. In 1968, a border commission was formed, and but unfortunately they couldn't materialize the condition of that consensus. So
when we talk about the water treaty between Pakistan and India or Run of Kutch, in both the cases, both the countries, they reach on a resolution just because of arbitrator or via a mediation process. But when we look on rest of the issues like Siachen, uh, like trade, India basically always avoid any sort of arbitration or mediation. Okay, that's why they couldn't reach or they couldn't progress any concrete step in regarding the rest of the issues. During Musharraf period, composite dialogue was started to resolve all outstanding issues between India and Pakistan. In 2008, Mumbai incident took place in which 166 people were killed. India accused Pakistan and its religious organization for its involvement. Pakistan denies and seeking evidence. Dialogue became hostage to the Mumbai incident. The most optimistic and the most optimistic period between India and Pakistan when they started the composite dialogue in a Musharraf time period. And Musharraf Kashmir formula is also famous. It's the only viable solution to the Kashmir. Musharraf presented four-step formula to resolve the Kashmir issue, but unfortunately, Indian bureaucracy, okay, they uh, they they resisted, and that dialogue couldn't be matured eventually. In December 2015, both countries decided to initiate comprehensive dialogue again, but was again disrupted by the Pathankot incident. So if you look at the history, in a recent history, two times both the countries, they started to initiate a composite dialogue, but both the times dialogue got hostage by different terrorist incidents. First, in first phase, it was the Mumbai incident, and in second phase, it was the Pathankot incident. Another issue, okay, that's why another issue which derail the dialogue process is the raw involvement in Balochistan and Karachi. In the recent past, Indian spy Kulbhushan Yadav also been captured and is under investigation in Pakistan. Historically, partition of the 1947 sowed the seed of hostility between India and Pakistan. Unfair or unjust justice started with Pakistan when the Radcliffe Award was announced. Okay, that was a quite unfair and unjust award, though Pakistan accepted it. But three main districts of Pakistan, which were deserved to be with Pakistan, one was Gurdaspur, second one was Ferozwala, and third one was Junagadh. These three districts, legally, geographically, they should be a part of Pakistan, but Radcliffe Commission awarded these three districts to India. So that's how, since their inception, hostility between the two countries, antagonism between the two countries started. Just after came into being, just after 2 months of their existence, or they came into being in October 1947, they started Kashmir War, which reached to an end in January 1949. Then obviously water disputes between the two countries. Most of the headworks of the canals, they were located in Ferozwala, and Radcliffe Commission, they awarded Ferozwala to India. That was another unfair with Pakistan, or that's why Pakistan is located in a low riparian region and India is an upper riparian country. Water flows from India to Pakistan, and that's why India used its edge to suppress Pakistan many times. We'll discuss in detail later water issues between India and Pakistan. In January 2004, the Prime Minister of India, Mr. Atal Bihari Vajpayee, and General Pervez Musharraf initiated a composite dialogue process and
identified almost 7 issues. Okay? Composite dialogues refers to a kind of dialogue which covers almost all the issues. Okay? Which issues have a low intensity like drug trafficking to a high intensity like Jammu and Kashmir. So when in 2004 a composite dialogue between India and Pakistan was started, they have to cover peace and security, including confidence building measures or CBMs. CBMs is a quite common strategy to build confidence between two nations. Generally, CBN include visa soften policies, cultural exchange, and such kind of measures. So both Vajpayee and General Pervez Musharraf, they both agree to work on CBMs. They also mentioned Jammu and Kashmir, and obviously they started dialogue on Jammu and Kashmir, and they were almost reached to a conclusion, but Indian bureaucracy came into their way, and the whole process was remained incomplete. Then Siachen was also part of that composite dialogue. Sir Creek is a part of Run of Kutch. We'll discuss this in detail later. Then water issues, especially the issue of the Vuller barrage, terrorism was also part of that composite dialogues, and drug trafficking. So these 7 issues they mention in their composite dialogue, that both the countries they will dialogue on these issues and they will try to resolve them. The composite dialogue process has failed to solve any problem. It was suspended in November 2008 on the ground of the terror attack in Bombay. In July 2009, the Prime Minister of India, Manmohan Singh, and the Prime Minister of Pakistan, Syed Yusuf Raza Gilani, in a joint statement at Sharm el-Sheikh, agreed to de-link peace process from acts of terrorism. But unfortunately, India didn't adhere to this agreement. So in 2009, both the countries got agreed to de-link the peace process from the act of the terrorism. That was a major development in peace process between India and Pakistan, because all the times when they start talks, okay, it got unfortunately suspended because of any terror incident, and most of the time their dialogue remain hostage by the terrorist activities. Yet the process could only be resumed in March 2011 at the secretary level. It is obvious that unless there is a change in the mindset of the political leadership, there is little hope of resolution of disputes. So there is need to change the mindset at both the sides. They take each other as their traditional enemy. So unless they change their mind, they couldn't reach any sort of resolution. India-Pakistan Home Secretary level talks were held in New Delhi on March 28 to 29 in 2011. In 2012, some progress was made regarding trade relation, which could not be continued as Pakistan refused to grant MFN status to India. I'll talk more on MFN later. In 2013, change of government took place in both countries. Nawaz Sharif was for peace, but Modi was aggressive due to the electoral politics. Modi came into power in India in 2014, and he was quite aggressive towards Pakistan, and he suspended all kind of dialogue with India. So there is no dialogues ongoing between India and Pakistan since 2014 when Modi came into the power.
In 2014, massive firing across the LOC. It was a hallmark of the LOC. 2016 Pathankot incident. Though Pakistan registered a FIR in Pakistan to investigate Pathankot incident, and Pakistani team also visited India to collect information, but India was reluctant to provide full information and could not provide full access to the Pakistani team. So we can't progress more on the investigation of the Pathankot incident. Now come to the raw involvement in Pakistan. It has been revealed in Pakistan that Indian intelligence agency raw is involved in various destabilize activities, subversive activities in Pakistan, especially in Karachi and Balochistan. MQM link with RAW have been unearthed by some of the previously associated MQM leadership, and the arrest of the Kalbhushan Yadav is also evidence which shows that RAW is involving Pakistan to create destabilization. Let's start Pakistan-India relation regarding their trade. First, have a look on our MFN, our most favorite nation. Most favorite nation generally WTO requirement. Okay, WTO was formed in 1995. Prior to 1995, it was a GATT, General Agreement on Tariff and Trade, okay, which signed in 1948. So in 1948 to 1995, it was GATT, GATT, which was responsible to regulate international trade. But in 1995, GATT transformed into a WTO, or World Trade Organization, and it is the requirement under the WTO that its members would grant this status of MFN to each other by 2003. But Pakistan always refused to give this status, this MFN status, to India. What does MFN mean? MFN stands for Most Favorite Nation. MFN mean that equal tariff for all. Equal tariff for all in this regard, that a country will not discriminate regarding import from the other countries. अगर मैं आपको आसान से अल्फाज में बताऊं कि जैसे इंडिया बाकी मुल्कों से इंपोर्ट करता है जो प्रोडक्ट्स वे, और जो टैरिफ उनको ऑफर करता है, जब इंडिया पाकिस्तान से इंपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान को भी वही टैरिफ ऑफर करेगा. So there would be no discrimination regarding import from the countries, okay, whom you awarded the MFN status. In other words, we say equal tariff for all. कि आप सारी जो countries हैं उन सबको आप एक जितना टैरिफ ऑफर करेंगे. एक जितना टैरिफ ऑफर करने का मोस्टली ये मतलब नहीं होता कि हम एक ही परसेंटेज ऑफर करेंगे. जनरली कंट्रीज दे फॉर्मुलेट अ स्लैब. टेक एन एग्जांपल के अगर आपने मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो यू फॉर्म अ स्लैब 3 to 5%. मैं अगर पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान ने अगर मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो पाकिस्तान मशीनरी के ऊपर 3 to 5% टैरिफ इंपोज करेगा. और चाइना से जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम चाइना से जो मशीनरी आएगी उस पर हम 3% टैरिफ रिसीव करेंगे, लेकिन जो इंडिया से मशीनरी आएगी उस पर हम 5% करेंगे. सो देयर इज लिटिल मार्जिन अवेलेबल अंडर MFN कंडीशन, बट दैट मार्जिन वुड नॉट बी वाइड. ये नहीं हो सकता कि आप चाइना से अगर मशीन इंपोर्ट करें तो आप 3% टैरिफ चाइना को ऑफर करें, और इंडिया से जब आपने इंपोर्ट करनी हो तो आप 20% टैरिफ इंडिया को ऑफर करें. ठीक है, दिस इज समथिंग अगेंस्ट द MFN स्टेटस. तो MFN स्टेटस में यू आर बाउंड, अ कंट्री गेट बाउंड टू डील इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है, with a equal kind of behavior. ठीक है, there is no discrimination allowed, ठीक है, while trading with the countries,
कि आप चाइना के साथ कुछ और पॉलिसीज रखें या इंडिया के साथ कुछ और पॉलिसीज रखें. इंडिया अवॉर्डेड MFN स्टेटस टू पाकिस्तान इन 1996. 2012 में पाकिस्तान और इंडिया के MFN स्टेटस के ऊपर डायलॉग हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को MFN स्टेटस नहीं दिया. और जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ था, पुलवामा इंसिडेंट के बाद इंडिया ने भी जो पाकिस्तान को MFN स्टेटस दिया हुआ था वो वापस ले लिया था. सो इस वक्त जो करंट पोजीशन ये है कि जो इंडिया है उसने भी पाकिस्तान को MFN स्टेटस नहीं दिया हुआ, और जो दिया था वो पुलवामा इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया था. और पाकिस्तान ने भी इंडिया को MFN स्टेटस नहीं दिया. पाकिस्तान ने तो कभी दिया ही नहीं इंडिया को MFN स्टेटस. अच्छा, though India awarded MFN status to Pakistan, but 47 to 1993 balance of trade remained in favor of Pakistan. But 1993 to onward, when India got a bailout package from the IMF, so 1993 they reorganized their economy, they rebuilt their economy 1993 to onward. So that in that time period, balance of trade remained in favor of India. So 47 to 1993, balance of trade was in favor of Pakistan, but 1993 to till that date, balance of trade is in favor of India. Let's talk about more on India-Pakistan trade relation. So MFN की मैंने काफी सारी बात कर ली, बस MFN का मतलब ये है कि इक्वल टैरिफ फॉर ऑल, आप सबको एक जितना टैरिफ देंगे और देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग योर ट्रेडिंग पार्टनर्स. इंडिया ने 1996 में पाकिस्तान को MFN स्टेटस दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद इंडिया को नहीं दिया. अच्छा, while India awarded MFN status to Pakistan, but still it imposed many non-tariff barriers on Pakistan. Non-tariff barriers like on the basis of quality, they can restrict import from Pakistan. On the basis of security, they can restrict import from the Pakistan, and on so many other grounds, they can restrict import from any specific country. Other than tariff, all kind of restrictions, they fall in non-tariff barrier. तो इंडिया ने पाकिस्तान को MFN स्टेटस तो दिया था, लेकिन जो पाकिस्तान से इंडिया जितनी इंपोर्ट हो रही थी उसके ऊपर बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर जो उनसे थे, नॉन टैरिफ बैरियर इंडिया ने इम्पोज कर रखे थे. फातिमा अब्बासी का एक क्वेश्चन है कि सर अगर MFN ना हो तो आप जितना मर्जी टैरिफ उस कंट्री के ऊपर, आप उस कंट्री से जो आप चीजें इंपोर्ट करते हैं आप उनके ऊपर जितना मर्जी टैरिफ चाहे लगा लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. लेकिन अगर आपने जिन कंट्रीज को MFN स्टेटस दिया हुआ है उन सब कंट्रीज के लिए आपको एक ही टैरिफ प्लान करना पड़ेगा. ये नहीं हो सकता कि एक कंट्री जिसको आपने MFN स्टेटस दिया है उसके लिए आप टैरिफ डिफरेंट रखें और दूसरी कंट्री जिसको आपने MFN स्टेटस दिया है उसके लिए टैरिफ डिफरेंट हो. तो अच्छा, though India awarded MFN status to Pakistan in 1996, but balance of trade still remained in favor of India. And the time period when India haven't awarded any such status to Pakistan, balance of trade was in favor of Pakistan. That is something very astonishing. कि जब इंडिया ने हमें MFN स्टेटस नहीं दिया था तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पाकिस्तान की फेवर में था, और जब से इंडिया ने पाकिस्तान को MFN स्टेटस दिया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो सा है वो इंडिया की फेवर में रहा है. तो इंडिया ने बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर पाकिस्तानी इंपोर्ट्स, पाकिस्तानी जो गुड्स थी उनके ऊपर इम्पोज कर रखे थे टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ द MFN. There is a debate in Pakistan that should Pakistan grant this status to India or not. Before reaching to any conclusion regarding this, first we need to have a look on India-Pakistan trade history. Trade is the main ingredient of bilateral relation between India and Pakistan. In 1947, Pakistan 70% trade was with India.
and India's 63% export were to Pakistan. Okay, so when both the countries they came into being, okay, they have a huge trade with each other. Almost 70% of their whole trade was with India, and that was on both sides. Due to war in 1948 and 49, this trade relationship were affected. By 1951, trade was in favor of Pakistan. At that time, we exported 113 million US worth of goods to India, and we imported just $0.008 million worth of goods from India. So there was a huge trade deficit on Indian side. This balance of trade was obviously in favor of India up to the 1965, with the exception of few years. Trade remained suspended for 10 years, 1965 to onward. And in 1975, a bilateral trade agreement was signed for the 3 years, and that agreement restored the trade between India and Pakistan. So 75 के बाद फिर जब इनमें ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद इनकी ट्रेड रिस्टोर हुई। तो 65 से 75 तक ये वो 10 साल हैं जब पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड सस्पेंडेड रही है। अच्छा, ड्यूरिंग 3 years from 1975 to onward, trade was not large, but balance of trade was in favor of India and the agreement was not renewed. तो 75 से 78 तक बैलेंस ऑफ ट्रेड जो सा था इंडिया के पास रहा। ऐसा क्यों हुआ, मैं इसकी कुछ जो रीजंस है उस पर मैं डिस्कस कर लूँ। ये 1971, before 1971, East Pakistan was part of Pakistan, and Pakistan major export includes Patsan and cotton. And Patsan mainly produced in East, mainly produced in East Pakistan. वहाँ से तो सारी East Pakistan में होती थी। तो 1971 से पहले हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था was in our favor, क्योंकि हम इंडिया को और बाकी जो दुनिया उसको पटसन और कॉटन वेस्ट पाकिस्तान में होती थी, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। 1971 में जब से ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया तो ऑब्वियसली उसकी जो पटसन की एक्सपोर्ट थी और ईस्ट पाकिस्तान से जो राइस की हमारी एक्सपोर्ट होती थी, उसकी वजह से बहुत बड़ा हमारी जो एक्सपोर्ट का नंबर्स है वो नीचे चला गया। तो इस वजह से 1975 में जब ट्रेड रिस्टोर हुई इन फॉर 3 years, so most of the time 1975 to 1978 balance of trade was remained in favor of India. During the next 12 years, 1978 to 1990, volume of trade was from $30 million to each reach at $80 million. Okay. Gradually their trade increases. From 1991 to 1993, volume of the trade double and it reaches at $160 million US. And up till 1993, it was in favor of Pakistan. The term, 1993 में India took a bailout package from IMF. ये वो time period है जब post Cold War politics start होती है, और you know in a Cold War time period Pakistan was an American ally, जिसकी वजह से पाकिस्तान में as such पाकिस्तान की करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और अमेरिका से in terms of aid बहुत सारे डॉलर आते थे, military aid and civilian aid. तो as such ये कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में पाकिस्तान को अपनी करेंसी की वजह से बड़ा एज रहा इंडिया के ऊपर। यू नो कि अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग हो तो आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होती हैं, और अगर आपकी करेंसी वीक हो तो जनरली जो आपका एक्सपोर्टर होता है वो रिलक्टेंट होता है टू एक्सपोर्ट समथिंग। क्योंकि अगर आपकी करंट में, वैसे तो ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपकी करेंसी जोन सी है वो अंडर वैल्यूड होगी तो आपका जो एक्सपोर्टर है उसको फायदा होगा, और अगर आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड होगी तो आपका जो एक्सपोर्टर है उससे फायदा नहीं होगा। हालांकि ओवर वैल्यूड करेंसी में जो इंपोर्टर होता है उससे ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए चाइना ने अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू रखा हुआ है,
और अमेरिका उसको हमेशा क्रिटिसाइज करता है। अगर करेंसी अंडर वैल्यू हो तो एक्सपोर्टर को कैसे फायदा होता है, इसके ऊपर फिर मैं कभी बात करूंगा। So the trade gap of 27 US million dollar in 1993 and 94 in favor of India has increased 1.47 billion dollar in 2010 to 11. So वो ट्रेड गैप जो 1993 में 27 मिलियन डॉलर का था, ठीक है, 2010-11 में that reach round about 1.47 billion dollar in favor of India. So gradually हमारी एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह, और you know कि 1993 के बाद मोस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बहुत टर्मोइल रहा, बहुत क्राइसिस रहा, हमने कई दफा IMF पैकेज लिया, अभी भी हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमिक है। तो इस तरीके से ये ट्रेड गैप जो सा है पाकिस्तान इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है। Presently, there are 4 areas where Pakistan is worried about, okay, when they do trade with India. First is agriculture, second is pharmaceutical, third is auto, and fourth is textile. पाकिस्तान इंडिया की जो 90% ट्रेड होती है वो इन 4 एरियाज में होती है, एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल्स में, ऑटो सेक्टर में और टेक्सटाइल में। In case of agriculture, India gives subsidy to its farmer, which is not available to Pakistani farmer. So Indian agri products are cheaper than Pakistan, and it would affect agriculture sector. Indian agriculture sector is highly subsidized, and you know, under the WTO rule, governments, they have to reduce the level of the volume of that subsidy. ये WTO कहता है, लेकिन इनिशियली जब WTO 1995 में फॉर्म हुआ तो उन्होंने डेवलप कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया था कि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सब्सिडीज हैं वो विथड्रॉ करें, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको अलाउ किया गया था कि वो अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सब्सिडीज टू सम एक्सटेंट दे सकते हैं। बट इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज था तो इस वजह से उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में पावर शॉर्टफॉल है, इंडिया के अंदर आपको सीड, फर्टिलाइजर्स, इवन उनके लिए जो पावर टैरिफ है फार्मर्स के लिए वो बहुत चीप है। इसके अलावा वहाँ पे इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सारे सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर फार्मर को अवेलेबल्स होती हैं। तो इस वजह से इंडिया की जो एग्रीकल्चर में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया क्योंकि उसने अपने सेक्टर को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज किया हुआ है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर की ट्रेड में हमेशा इंडिया को फायदा रहा पाकिस्तान के साथ। और सेकंड जो सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ऑब्वियसली in current scenario, pharmaceuticals and automobiles, India is far ahead of Pakistan. Both the products, automobiles, auto cars, are pharmaceuticals related products. They are much cheaper in India. इस वजह से because by protectionist policies in a Cold War time period, they developed their auto sector and their pharmaceutical sector a lot. क्योंकि पूरे कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में इंडिया ने मोस्टली, क्योंकि WTO तो था नहीं, सो इंडिया वाज फ्री टू प्रैक्टिस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। तो उस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से उनके जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको बहुत फायदा हुआ। और पाकिस्तान क्योंकि कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में वी रिमेन्ड हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स, इस वजह से हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो कभी इतनी डेवलप नहीं हुई। और मोस्टली क्योंकि हमने चाइना को MFN स्टेटस दिया हुआ है, एंड चाइना, अवर मार्केट्स आर फ्लडेड विद द चाइनीज गुड्स, एंड ऑब्वियसली जिस प्राइस के ऊपर चाइनीज गुड्स अवेलेबल होती हैं उस प्राइस के ऊपर तो हमारा मैन्युफैक्चर वो चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो अगर हमारी मार्केट में हम इंडिया को MFN स्टेटस दे भी दें तो चाइना ने ऑलरेडी, पाकिस्तान चाइना के जो ट्रेड रिलेशन है उसकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है। अब इंडिया उसको और क्या डैमेज करेगा। In case of textile sector, it would be mutual benefit. Pakistan has an edge in textile raw material and products,
And India has an edge in the textile machinery. Pakistan can import machinery at a low cost from India, and Pakistani raw material can be consumed in India. So when we talk about the textile sector, it's beneficial for both the countries. We can import textile machinery from India, and India can import textile raw material from Pakistan. Should Pakistan be given MFN status to India or not? You know, when we talk about the trade, we use the term पॉजिटिव सम गेम. ठीक है, आईआर में दो टर्म्स है, इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होती है. मैंने शुरू में जो मेरे थ्योरीज के लेक्चर थे उसमें मैंने ये दो टर्म्स यूज की थी, पॉजिटिव सम गेम और जीरो सम गेम. पॉजिटिव सम गेम ये होती है कि आपका ऐसा रिलेशन जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चन बाद में लूंगा, पहले मैं चाह रहा हूं कि मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं उसको कंप्लीट कर लूं. पॉजिटिव सम गेम होती है कि जिसमें जो एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें दोनों का फायदा हो. ट्रेड इज अ पॉजिटिव सम गेम. जो बायर होता है वो भी गेन कर रहा होता है और जो सेलर होता है वो भी गेन कर रहा होता है. तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बायर और सेलर दोनों गेन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सम गेम. और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें अगर एक पार्टी गेन करे तो दूसरी पार्टी का लॉस हो, अगर दूसरी पार्टी गेन करे तो पहली पार्टी का लॉस हो, इसको हम कहते हैं जीरो सम गेम. जो वॉर होती है उसमें जीरो सम गेम होती है, जो ट्रेड होती है उसमें पॉजिटिव सम गेम होती है. इसलिए ट्रेड के अंदर फायदा दोनों पार्टीज का होता है. हाँ, ये पॉसिबल है कि एक पार्टी का फायदा बहुत ज्यादा हो और दूसरी पार्टी का फायदा बहुत कम हो, ये पॉसिबिलिटी है. लेकिन ट्रेड के अंदर बायर और सेलर दोनों का फायदा हो रहा होता है, तो ट्रेड पॉजिटिव सम गेम है. अगर पाकिस्तान की इंडिया के साथ ट्रेड होगी और पाकिस्तान इंडिया को MFN स्टेटस दे देगा तो ऑब्वियसली इससे पाकिस्तान की जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो हमारे लोग हैं उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, मार्केट में कंपटीशन आएगा. सो in my personal opinion, I am in favor of Pakistan-India trade, and I also in favor of that Pakistan should award MFN status to India. After trade relation, now come to the water disputes between India and Pakistan. India and Pakistan seems to be on a collusion course around the issue of water. Hawks on both sides predict that India and Pakistan may fight a water war in the near future. There are various water disputes between the two countries. Pakistan is also quite alarmed by India's plan to build 12 hydropower projects in Afghanistan, which experts say will seriously increase Pakistan water shortages. So that's how India is playing water politics. They are not only diverging which waters come from India to Pakistan, they also try to divert water of the Kabul river which come from Afghanistan to Pakistan. So India जो सा है वो बहुत ज़्यादा severely they are playing water politics. The Indus River system, which is the lifeline of Pakistan and the Western India, comprises the river Indus and its 5 main tributaries, namely Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, and Satluj. Division of the subcontinent in 1947 created a new international boundary which cut across the Indus River system unevenly between India and Pakistan. That was the dilemma of partition. That Indus River system was cut unevenly between India and Pakistan. Indus Water Treaty signed in September 1960. Mainly it consists of 12 articles and 8 appendices or annexures. It defines the sharing of water between the two countries, rights and obligation of the two countries. The partition award turned over to India 3 vital districts that were originally allocated to Pakistan. I discussed earlier. वो 3 districts थे Gurdaspur,
फिरोजवाला और जूनागढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे जो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया को दे दिए गए। अंडर द इंडस बेसिन ट्रीटी ऑफ 1960, ठीक है, इट वाज मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। 3 ईस्टर्न रिवर, रावी, ब्यास एंड सतलुज, they were given to India, and 3 western river, Indus, Jhelum and Chenab, were given to Pakistan. The 3 remaining western river on which Pakistan now relies upon all originates in pass through Kashmir before entering in Pakistan. In other words, India, after having obtained the waters of the 3 eastern rivers through Indus Water Treaty, is now trying to take control of our 3 western rivers as well. Under the treaty, Pakistan was to enjoy the unrestricted use of the Indus, the Jhelum and the Chenab, but exceptions were there. ठीक है, तो ये जो 3 रिवर पाकिस्तान को मिले थे, इंडस, झेलम और चनाब, ठीक है, Pakistan can use their water unrestrictedly, but however few exceptions were there, and these exceptions were present in the annexure of the Indus Water Treaty, ठीक है, जो उसके appendices हैं इंडस वाटर ट्रीटी के, उसमें ये exceptions कुछ हैं जो कि present हैं. There is a growing feeling in Pakistan that while India is increasingly building dams on its western river, it is simultaneously engaged in activities aimed at stopping Pakistan, the lower riparian, from building storage dams on Pakistani rivers. India have a double standards, ठीक है, when India have to deal with Nepal, क्योंकि in case of India and Nepal is a upper riparian country and India is a low riparian country. But in case with Pakistan and India, India is upper riparian and Pakistan is a low riparian country. तो gradually, recently, कुछ टाइम पहले जब नेपाल ने कुछ डैम्स बनाए अपने रिवर्स के ऊपर, तो इंडिया स्पेशली deputed its artillery to destroy those dams. यानी कि as such, जब नेपाल ने डैम बनाए तो इंडिया ने बाकायदा अपनी आर्टिलरी वहां डिप्यूट की हुई है कि वो जब चाहे उन डैम्स को उड़ा देगा. और जब पाकिस्तान की बात आती है तो obviously they play double standard. India water strategy thus boiled down to construction of more and more dams on across boundary river inside its own territory, while obstructing dams in low riparian neighbors and destroying those in upper riparian Nepal. अच्छा, first have a look, time short है, मैं ज़्यादा डिटेल में शायद ना जाऊँ. Vular Barrage. In the last 26 years, the two countries have held 13 rounds of secretary level talks on the issue of India's right to build the Vular Barrage. At around 14 rounds of talks, both sides are expected showed little flexibility. Indian secretary stressed India had the right to build the barrage under all conditions, and Pakistan held that the construction of the Vular Barrage or any other project that resulted in Indian control over the river Jhelum was unacceptable. So river Jhelum ke upar India aiming to build a Vular Barrage. The storage capacity of the Vular Barrage is 0.30 million acre feet, is a clear violation of Indus Water Treaty. And there are two main compulsion generally Indus Water Treaty impose on Vular Barrage, that India can't divert the main flow of a river. Okay, or another condition which Indus Water Treaty imposed on Indian project, that they can't elevate the height of the head of the barrage from a specific extent. उससे ज़्यादा ये जो उससे ज़्यादा जोन सा है ये जो
उससे ज्यादा ये जो एलिवेटेड डैम है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो वुलर बैराज के ऊपर जो अच्छा सच इसके ऊपर डायलॉग चल रहे हैं और वुलर बैराज का काफी सारा हिस्सा जो है इंडिया ने वो उसको कंप्लीट भी कर लिया है। एक और जो इश्यू इंडिया और पाकिस्तान, वुलर बैराज बेसिकली झेलम रिवर के ऊपर है, रिवर झेलम पे। और फिर जो इंडस रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडिया ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर, ठीक है। बगलियार डैम इज वन ऑफ देम who gave this decision in favor of World Bank appointed a mediator, Professor Raymond, in to sort out the issue of Bagliar Dam between India and Pakistan, and he gave verdict in favor of India. And he looked at the matter quite professionally in this sense के जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज थे प्रोफेसर रेमंड ने वो सारे देखे, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया की एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप है उसको प्रोफेसर रेमंड ने जब वो बगलियार डैम को इंस्पेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो उस बगलियार डैम में जो केस था उसमें इंडिया को जो मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक का उसने काफी फेवर किया। एक और जो इशू वुलर और बगलियार के अलावा पाकिस्तान और इंडिया में चल रहा है वो किशन गंगा रिवर का है, किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। किशन गंगा रिवर विच नेम्ड एज नीलम रिवर इन पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान में आता है तो उसको हम नीलम रिवर कहते हैं, और इंडिया ने दरिया नीलम का नाम जो उनसा है वो किशन गंगा रिवर रखा हुआ है। The treaty allows India to construct a hydroelectric project with storage within a certain limit, ठीक है। तो इंडिया को ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी अलाउ करता है कि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो सा है वो बिल्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके ऊपर दो कंडीशन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि पहली कंडीशन ये है कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो है वो उससे डिस्टर्ब ना हो या वो उसको डाइवर्ट ना करे, ठीक है। और इसके अलावा जो सा है जो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होगा उसकी कैपेसिटी को भी देखा जाएगा कि वो कितनी कैपेसिटी का है। जब हम किशन गंगा की बात करते हैं तो किशन गंगा बेसिकली जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया का, ये जो नीलम दरिया नीलम का पानी है, ये जो किशन गंगा रिवर का पानी है उसको डाइवर्ट करके ये वुलर बैराज में डालता है, ठीक है। इस वजह से जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है वो क्लियर वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी की, एंड ऑब्वियसली इंडिया इज वर्किंग ऑन इट। और काफी सारे इश्यूज हैं किशन गंगा के साथ, ठीक है। बट तो ये तीन बड़े इश्यूज हैं वो जब हम बात करते हैं वाटर डिस्प्यूट्स की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वुलर बैराज, किशन गंगा, बगलियार डैम। और अनफॉर्चुनेटली सिंस 1960s, ठीक है, वी हैवंट बिल्ट एनी डैम, ठीक है। उसकी वजह से ये हुआ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एनेक्सचर्स के अंदर कुछ प्रोविजन थी उनको इंडिया यूज कर रहा है, क्योंकि दे क्लेम के पाकिस्तान जोन सा है वो कोई डैम नहीं बना रहा और पाकिस्तान जोन सा है वो उसका सारा जो पानी है मॉनसून में और बाकी सीजन्स के अंदर वो वेस्ट हो रहा है। तो अगर हमें डैम या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप अलाउ कर देंगे तो वी कैन यूज दैट वाटर मोर एफिशिएंटली। और जब हम वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन है उसको देखते हैं तो जो आर्बिट्रेटर होता है, जो मीडिएटर होता है, ऑब्वियसली दे टेक सच आर्गुमेंट सीरियसली कि कौन सा कंट्री जो वाटर मैनेजमेंट है वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव है या वो वाटर को कितना एफिशिएंटली यूज कर रहा है। और उसमें ये भी देखते हैं कि कौन सा कंट्री जोन सा है वो वाटर को जोन सा है उसने
उस जो पहले यूज करना शुरू किया है। ठीक है, अगर आप एक रिवर के ऊपर आपने अपना प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट कर लिया, तो उस रिवर के पानी के ऊपर योर राइट स्टैंड्स फर्स्ट। और अगर दूसरा कंट्री है उसका प्रोजेक्ट बाद में कंप्लीट हुआ तो उनका राइट सेकंड होगा। तो जब किशन गंगा की बात हुई थी, तो किशन गंगा के ऊपर पाकिस्तान ने भी अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोजेक्ट जो इंडिया का किशन गंगा का प्रोजेक्ट था उसके बाद कंप्लीट हुआ, वो भी चाइना ने हमें सपोर्ट किया, तो हमने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो उसकी वजह से नीलम में जो हमारा हिस्सा आया वो कम था, क्योंकि इंडिया का प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट हो गया था। तो जो आर्बिट्रेटर होता है, मीडिएटर होता है, वो ये भी नोटिस करता है कि किसके प्रोजेक्ट पहले कंप्लीट हुआ, किसका बाद में कंप्लीट हुआ। और सेकंड थिंग, मतलब दे कीप इन माइंड कि जब पाकिस्तान ने इश्यू रेज किया तो इंडिया का प्रोजेक्ट कितने परसेंट कंप्लीट हो चुका था। जब मैं वुलर बैराज की बात करता हूँ, तो जब ये वुलर बैराज का प्रोजेक्ट इंडिया सारा बना रहा था, तो जमात अली शाह पाकिस्तान में इंडस वाटर कमिश्नर थे, एंड ही ओवरलुक्ड द होल सिचुएशन, ही टुक ब्राइब फ्रॉम इंडिया, and I guess Jamaat Ali Shah is proclaimed offender now, क्योंकि he betrayed to his land. जब पाकिस्तान ने वुलर इशू को रेज किया वर्ल्ड बैंक के सामने, तो ऑलमोस्ट इंडिया उसका बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुका था, मेरे ख्याल से 60-70% कंप्लीट हो गया था। तो इस वजह से, क्योंकि हमने बहुत लेट इशू को रेज किया, तो हमें बहुत ज्यादा फेवर वुलर जो बैराज इंडिया का जो प्रोजेक्ट था वुलर बैराज का, उसमें, या हम किशन गंगा में भी हमने अपना प्रोजेक्ट लेट कंप्लीट किया। नीलम झेलम अगर हम पहले कंप्लीट कर लेते तो उस पानी के ऊपर ज्यादा हमारा हिस्सा होता, इंडिया का कम होता। सो नाउ कम टू द सर क्रीक. Sir Creek is a 7,000 square kilo, sorry, run of Kutch. Run of Kutch is a 7,000 square kilometer disputed land between India and Pakistan. Border is not marketed on the land, and Sir Creek is a small part of Run of Kutch. Run refers to a boggy land, Quagmire ya Daldal. So, and Kutch is the district where that run is located. तो जो रन ऑफ कच्छ है उसका एक हिस्सा है सर क्रीक. क्रीक रेफर्स टू ओपन ऑफ रिवर इनटू द सी. ठीक है, जो छोटी छोटी दरारें होती हैं समुंदर में खुश्की की तरफ, उसको हम क्रीक कहते हैं. तो रन ऑफ कच्छ जोन सा है, इसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है वो डिफाइन नहीं है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर सियाचिन के ऊपर डिफाइन नहीं है. उस कंफ्यूजन की वजह से ये इशू चल रहा है. रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान का या इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि वहाँ पे एक तो फिशिंग इंडस्ट्री है बहुत बड़ी रन ऑफ कच्छ में, दूसरा वहाँ ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं. पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि जो रन ऑफ कच्छ है बेसिकली इसके ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी है वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ वाटर नहीं है, यहाँ पे लैंड भी है. तो रन ऑफ कच्छ में कुछ पोर्शन वाटर है, कुछ लैंड है, बॉगी एरिया है. तो जबकि इंडिया का क्लेम ये है कि रन ऑफ कच्छ को जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी है और थॉलबर्ग डॉक्ट्राइन है उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए. लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि इस पे लॉ ऑफ सी अप्लाई नहीं होता रन ऑफ कच्छ पे. और 1968 में एक वेस्टर्न बाउंड्री कमीशन फॉर्म हुआ. उसके अलावा इन 2017 इन 2007 if I'm not wrong, ठीक है, पाकिस्तान and India they both conducted a joint survey of the area. ठीक है, but अनफॉर्चुनेटली कोई उसके बाद कंक्रीट डेवलपमेंट नहीं हुई. 1968 में भी जो वेस्टर्न बाउंड्री कमीशन फॉर्म हुआ था टू सॉर्ट आउट द इशू, ठीक है, बोथ द कंट्रीज दे रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट देयर रिकमेंडेशन. तो वो जो वेस्टर्न बाउंड्री कमीशन था 1968 का रन ऑफ कच्छ को रिजॉल्व करने के लिए, दोनों ने उसकी जो रिकमेंडेशन थी उनको रिफ्यूज कर दिया. तो इस वजह से रन ऑफ कच्छ का इशू, ठीक है, देयर इज अ स्टेलमेट ऑन रन ऑफ कच्छ. जो सर क्रीक है, आई गेस कि ये कोई
60 से 100 किलोमीटर की एक क्रीक है, और रन ऑफ कच्छ इज 7000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो रन ऑफ कच्छ का एक छोटा सा हिस्सा है सर क्रीक, ठीक है। और पाकिस्तान का क्लेम ये है कि दिस होल एरिया इज बिलोंग टू पाकिस्तान, ठीक है। एंड पाकिस्तान इज क्वाइट राइट इन इट्स क्लेम, ठीक है, क्योंकि जब हम बम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914 देखते हैं तो इन दैट रेजोल्यूशन रन ऑफ कच्छ वाज पार्ट ऑफ सिंध। तो अगर बम्बई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914 देखें तो उसमें रन ऑफ कच्छ पूरा सिंध के अंदर है। तो वो मैप्स भी शो करते हैं कि रन ऑफ कच्छ सिंध के अंदर है। सो अकॉर्डिंग टू दैट रेजोल्यूशन ऑफ 1914 रन ऑफ कच्छ पाकिस्तान का बनता है। लेकिन इंडिया इज इंसिस्टिंग टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी ऑन रन ऑफ कच्छ। ऑब्वियसली लॉ ऑफ सी रन ऑफ कच्छ पे इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि रन ऑफ कच्छ में सारा पानी नहीं है, वहां पे बहुत बड़ा हिस्सा लैंड का भी है। अगर वहां पे लैंड है तो आप लैंड के ऊपर लॉ ऑफ सी कैसे लगा सकते हैं? अगर लॉ ऑफ सी लगाया जाए रन ऑफ कच्छ के ऊपर तो ये एरिया डिवाइड होता है 50-50 पाकिस्तान में और इंडिया में। तो अलबत्ता पाकिस्तान इंसिस्ट कर रहा है जो गवर्नमेंट बम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914 के उसके अकॉर्डिंगली इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। सेम इज द केस विद सियाचिन। Siachen is the highest battlefield in the world. The problem started in 1984, and in 1984, Pakistan was Pakistan holds a strong position, but in 1987, by an adventure, India took the highest position, and in Siachen. तो unfortunately that was our negligence. 84 में हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी सियाचिन में, लेकिन बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस एंड इंडियन एडवेंचर 87 में हमारी जो पोजीशंस थी वो इंडिया ने सियाचिन में हमसे कैप्चर कर ली। सो नाउ दे आर कंपैरेटिवली एट एलिवेटेड हाइट्स, और हमारी जो हाइट्स हैं वो कम है। पाकिस्तान आल्सो लीव दिस relatively this issue is relatively easy to resolve. पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि जो सियाचिन है उसको नो मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, नो मैन जोन डिक्लेयर कर दिया जाए। ना उधर इंडिया की मिलिट्री हो ना पाकिस्तान की मिलिट्री हो। मेरे ख्याल से मैंने कश्मीर के लेक्चर में आपको बताया था कि जब 1948 में सीज फायर लाइन ड्रॉ की गई जिसको हम LOC कहते हैं, तो LOC जहां से सियाचिन ग्लेशियर स्टार्ट होता है वहां पे पहुंच के रोक दी गई, यानी LOC आगे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर डिमार्क नहीं की गई क्योंकि वहां ग्लेशियर था। तो जो लोग थे LOC को ड्रॉ करने वाले, उन्होंने सोचा कि ग्लेशियर के ऊपर जाके कौन लड़ेगा। तो LOC यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके ऊपर कोई डिमार्केशन बॉर्डर की नहीं है, जैसे रन ऑफ कच्छ में नहीं है। तो उस जो कंफ्यूजन थी उसका फायदा उठाया इंडिया। क्लेम करता है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स पहले आए, पाकिस्तान क्लेम्स करता है कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज पहले स्टार्ट की, ठीक है। लेकिन 84 तक हमारी चीजें फेवर में थी। 87 टू ऑनवर्ड जो पोजीशंस हैं वो इंडिया की ज्यादा स्ट्रांग है, बट वहां पे जो आपका फायर होता है उससे या जो यूज ऑफ वेपन होता है उससे कैजुअलिटीज नहीं होती, because of more casualties they comes from the harsh and unfriendly weather, जिसकी वजह से सारी casualties होती हैं। सियाचिन का इंडिया का स्टैंड सियाचिन के ऊपर ये है कि करंटली जिसके पास जो एरिया है, अगर वहां पे उस एरिया के अकॉर्डिंगली LOC या सीज फायर लाइन की डिमार्केशन हो जाती है तो इंडिया अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा। यानी कि जिसने जो एरिया कैप्चर किया हुआ है उसको एक्नॉलेज करके LOC को एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इंडियाज आर्गुमेंट। पाकिस्तान का कहना यह है कि सियाचिन वुड बी अ नो मिलिट्री जोन। मेरा ख्याल है कि सियाचिन हो गया। अफगानिस्तान का इशू है, ऑब्वियसली बोथ द कंट्रीज नॉर्दर्न अलायंस को अफगानिस्तान में यूज करके अफगान गवर्नमेंट को बहुत सारी एड देकर, उनको बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देकर और अपने बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस अफगानिस्तान में ओपन करके बेसिकली since Modi came into power, India tried to destabilize Balochistan. They want to create a kind of unrest in Balochistan.
ठीक है, दैट्स व्हाई देयर स्पाई कलबोशन वाज देयर। और इसके अलावा जो गवादा, अगर मैं अपना अगर अगला अगला लेक्चर अगर सी पैक पे देता हूँ, तो सी पैक में फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रही है बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, और फिर उसने ईरान को कैसे यूज किया, और जो सी पैक है उससे कैसे उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, और इंडिया को सी पैक से क्या खतरा है। तो अगर एक हमारा लेक्चर और सी पैक पे होता है तो उसमें हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारे और इश्यूज हैं, रिटर्न ऑफ प्रिजनर्स हैं, फिर प्रिजनर्स की भी टाइप्स हैं, आपकी 2-3 टाइप्स के प्रिजनर्स हैं। कश्मीर इशू को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में कोई क्वेश्चन आया तो इस दफा मोस्ट प्रोबेबली कश्मीर पे ही आएगा, या मैक्सिमम ट्रेड रिलेशन पे या वाटर डिस्प्यूट्स पे आ सकते हैं। सर क्रीक का या रन ऑफ कच्छ का इतने चांसेस नहीं है। मैं देख लेता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर वन बाय वन करके मैं देख लेता हूँ। एमन राव का एक क्वेश्चन है कि सर MFN स्टेटस डेंटी बैड यू बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा नहीं होना चाहिए था। Sorry, I couldn't understand the question. सर सब्सिडी इज इन फेवर ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, निम्रा नवाज का एक क्वेश्चन है कि सर सब्सिडी इन फेवर ऑफ इकोनॉमी। yes, अगर but for a subsidy you need a resources, ठीक है। subsidy is something which is subject to resources. India can afford subsidy, उनका वो पावर सब्सिडी दे सकते हैं। और मैं एक चीज बताऊं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हाईली सब्सिडाइज करती हैं, ठीक है। कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सब्सिडाइज है, और इंडिया का भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सब्सिडाइज है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। सही बात है। अगर आप असल में सब्सिडीज के भी दो पैटर्न्स है, एक है जनरल सब्सिडी, एक है स्पेशलाइज्ड सब्सिडी। जनरल सब्सिडी ये है जैसे गवर्नमेंट ऑयल के ऊपर सब्सिडी देती है तो वो जनरल सब्सिडी देती है। जनरल सब्सिडी में ये होता है कि जो ऑयल को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो सबसे ज्यादा सब्सिडाइज होता है। तो सब्सिडाइज जो सब्सिडी है वो जनरल नहीं होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि सब्सिडी उन लोगों को मिले दोज हु आर डिजर्विंग। ईरान जो स्पेसिफिक सब्सिडी है उस मॉडल को फॉलो कर रहा है, वो सिर्फ अपने उन लोगों को सब्सिडाइज करता है जो डिजर्विंग है, वहां पे जनरल सब्सिडी ऑफर नहीं होती। तो सब्सिडी आपका जो डिजर्विंग सेक्टर है उसके लिए होनी चाहिए। अनाया अली का एक क्वेश्चन है, बट सर इफ यू आर इन फेवर ऑफ आई गेस MFN, but Kashmir problem will allow to do this. Acha, how can we sort out a Kashmir problem, or how can we manage this problem? Obviously, Kashmir is a bone of contention between the two countries, but it's a quite complex and quite difficult to resolve this issue. Okay, to reach a resolve, first there is need that we should settle down our tiny issues like circling, Siachen, trade. We should adopt confidence building measures. Okay, we should go with trade. Take an example of India and China. They have border disputes on Aksai chain. India और China का Aksai chain के ऊपर बहुत बड़ा border disputes है, लेकिन उसके बावजूद आप इंडिया और चाइना का ट्रेड वॉल्यूम देखें, इट्स ह्यूज, इट्स मैनी बिलियन डॉलर्स। अच्छा, सेम अगर आप चाइना और अमेरिका रिलेशन देखें, ठीक है, दे हैव देयर डिस्प्यूट्स ओवर साउथ चाइना सी एंड अदर रीजन्स एज वेल, बट दे बोथ आर द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में इतने ज्यादा ट्रेड कोई नहीं करता जितनी अमेरिका और चाइना करते हैं। तो trade is something, as I told you earlier, is a positive sum game. It favors all the partners who are involved in it, all the parties who are involved in it. तो अगर पाकिस्तान इंडिया के ट्रेड रिलेशन होते हैं तो इसमें पाकिस्तान की आवाम का फायदा है। ऑब्वियसली करंट सिनारियो में तो जो करंट जो सिनारियो है इसमें जो सिचुएशन बहुत इंटेंसिफाइड है, we need
to cool down the situation, थोड़ा सा situation को normalize करने के बाद हम trade के बारे में सोच सकते हैं. Immediately तो हम trade के बारे में नहीं सोच सकते इस वक्त जितनी situation intensified है. लेकिन keep in mind कि जब से मोदी इंडिया में आया है, they are pursuing an aggressive foreign policy. Before Modi, I guess, especially in a Cold War time period, we were more assertive in our relation towards India as compared to India to Pakistan. तो कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादा एग्रेसिव थे, हम बहुत असर्टिव थे, और जब से मोदी आया है अब वो ज्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा असर्टिव हैं. सो दोनों साइड पे बैलेंस अप्रोच चाहिए. और मे बी जिस तरह मोदी डिलीवर नहीं कर पा रहा, होपफुली के नेक्स्ट टर्म में हो सकता है कांग्रेस आ जाए और उसमें हम जो सा है वो चीजों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन है फातिमा बासी का, सर काइंडली डिस्कस करतारपुरा फैक्टर. Kartarpura is a wonderful initiative. You know, we are living in a era of hybrid warfare. जब fourth और fifth generation warfare की बात होती है. In fourth, fifth generation warfare, a country tries to win the heart of the people who are people on the other sides who live in different pockets. ठीक है, this is the main strategy of hybrid warfare. तो ये जो करतारपुरा कॉरिडोर है, इसको ओपन करके जो इंडिया के अंदर उनके पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है, ठीक है, that is a fault line in India, ठीक है, and we can exploit that fault line. तो अगर करतारपुरा बॉर्डर ओपन होता है तो जो सिख कम्युनिटी है उसकी जो सिंपैथीज हैं वो वी कैन विन. और ये बहुत अच्छी चीज है, करतारपुरा बिल्कुल ओपन होना चाहिए और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत जबरदस्त मूव है. इवन मोदी के पास भी इसका रिप्लाई नहीं था, तो इट्स वंडरफुल इनिशिएटिव करतारपुरा. और ये आर्मी चीफ ने, जब ये सिद्धू आया था पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी पे, तो आर्मी चीफ ने सिद्धू को ये चीज ऑफर की थी. वंडरफुल इनिशिएटिव बाय पाकिस्तान आर्म फोर्सेस. अच्छा सर, हाउ डू यू सी पाकिस्तान स्टेप्स ऑफ क्लोजिंग रूट्स, ट्रेन्स, फिल्म एटसेट्रा. अच्छा, ये जो सारी चीजें होती हैं इसको हम कहते हैं दे केम इन द डोमेन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. ये होना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, मूवीज एक्सचेंज होनी चाहिए, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंक्रीज होना चाहिए. लास्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया के अंदर ट्रैक टू डिप्लोमेसी रही. ट्रैक टू डिप्लोमेसी वो डिप्लोमेसी होती है जिसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स निगोशिएशन में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आपके जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं वो निगोशिएशन प्रोसेस को लीड कर रहे होते हैं. तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी, कल्चरल एक्सचेंज, पीपल टू पीपल कांटेक्ट is very good for Pakistan and India, and that's how we can normalize our relation with each other. So ये जो जज्बाती किस्म की बातें होती हैं, हिंदुस्तानी फिल्म ना देखने की, गाने ना सुनने की, एंड प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने की, इनको आप कैसे देखते हैं एज पर ग्राउंड रियलिटीज. फातिमा अब्बासी का ये क्वेश्चन है. ऑब्वियसली देखिए, मैं खुद इंडियन मूवीज देखता हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज देखता हूँ. As such, you know, enemies, friends and foes, they both are socially constructed. ठीक है, अगर हम कहते हैं इंडिया हमारा एनिमी है या हमारा दुश्मन है, तो we construct India in such a way. अगर हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, तो we constructed China's image in such a way. तो enemies, friends and foes, they both are socially constructed. अगर आप आज इंडिया का जो एक वॉर रेट्रिक है उसको वाइड करके नॉर्मल चीजों की तरफ जाएंगे, और ऑब्वियसली वी कांट चेंज नेबर्स, हमने इंडिया के साथ रहना है. और जहां तक पाकिस्तान इंडिया के कल्चर की बात है, तो उनमें ऑलमोस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान दे बोथ शेयर सेम काइंड ऑफ कल्चर. कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पाकिस्तान इंडिया के कल्चर में. दे बोथ पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर. तो ऐसा ये चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की तरफ ये सारे स्टेप्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आते हैं, और ये होने चाहिए. सर वॉर्स का कोई, एक निम्रा नवाज का क्वेश्चन है, सर वॉर्स का कोई सर्टेन रिजल्ट कुछ नहीं होता, इंडिया के साथ वॉर्स के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट सेम है, देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन.
हाँ, ऑब्वियसली हमने 3-4 जंगें कश्मीर पे भी कर ली। फोर्सफुली हम इंडियन कश्मीर नहीं ले सकते, वो हमारा कश्मीर नहीं ले सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें अब चाइना और ताइवान की एग्जांपल ले सकते हैं। चाइना अगर चाहे तो 1 घंटे में ताइवान को कैप्चर कर सकता है, लेकिन 70 साल गुजर के उसने कैप्चर नहीं किया। तो आप जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो, क्योंकि इन ए मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, वी measure power from not only from a hard power context but from the soft power context, and a real power is a basically mix of soft power and hard power, military might and economy, that is called smart power. तो अगर आपके पास स्मार्ट पावर नहीं है, आप जब, तो इसका मतलब यू आर वीक। तो इन फ्रॉम ए मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट, नो डाउट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, but from economic perspective we are almost we was about to default, but luckily Saudi Arabia, UAE और चाइना से जो 8 आ गई, we avoided a default, वरना अब तक हम डिफॉल्ट कर चुके होते। तो पावर को मॉडर्न जो रिलेशंस हैं उसमें सिर्फ आप मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते। Policy options for Pakistan in India-US alliance perspective. You know, since 2007, India and US, okay, they signed a civil nuclear deal, okay, but they couldn't mature that deal. Obviously, India is a big market, and US companies, they have interest in India to avail that market, and they both are strategic partner because they both have common enemy, that is China. But India is generally India is not ready to compromise its relation with Russia. So unless there is a confusion at Indian side, okay, whether they should compromise their relation with Russia to get their alliance with US. So मेरा नहीं ख्याल के नियर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा इंडिया यूएस अलायंस बन सकता है, क्योंकि अभी भी इंडियन जो मिलिट्री है वो हाईली डिपेंडेंट है रशियन वेपन के ऊपर। उनकी एयरफोर्स, एयरक्राफ्ट सारे रशियन वेपन्स हैं, उनके आर्टिलरी, उनकी चीजें काफी सारी रशियन है। और जब तक हाँ, यूएस इंडिया अलायंस कोई मेच्योर हो सकता है अगर इंडिया अपने और रशिया के जो रिलेशन है उस पर कॉम्प्रोमाइज करे, और मेरा नहीं ख्याल ना मोदी कर सकता है ना कोई कांग्रेस का लीडर कर सकता है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ऑब्वियसली इन दोनों का जो कॉमन इंटरेस्ट है इंडिया और यूएस का, दैट इज चाइना, ठीक है। लेकिन हमेशा अब रिसेंटली देखें जो इंडिया चाइना के जो रिसेंटली एक ट्रेड पे इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। India is not ready to give free access to American companies in India, कि उसकी मार्केट को इजीली एक्सेस कर ले। तो इसके ऊपर ट्रम्प ने और इंडिया के अभी रिसेंटली भी डायलॉग हुए हैं, उनके ट्रेड इश्यूज भी चल रहे हैं। तो दे बोथ आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दे बोथ हैव कॉमन एनिमी, लेकिन बट दे हैव इश्यूज एज वेल, और उनको सॉर्ट आउट करना भी आसान नहीं है। So why Manmohan for Kartarpura celebration? Manmohan was a prime minister of India in a Congress time period. So obviously, Congress generally takes a reasonable stand when it comes to the Pakistan. And you know, recently revocation of Article 370 also opposed by the Congress chairman Rahul Gandhi. तो इस वजह से कांग्रेस स्टैंड्स इज क्वाइट रीजनेबल, दे रिमेन रीजनेबल ऑलवेज टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो मनमोहन को बात करने का मतलब जो कांग्रेस और बीजेपी में एक रिफ्ट है, उस रिफ्ट को ज्यादा करना है, एंड इट्स अ गुड स्ट्रेटजी कि आप अपने दुश्मन में जो एक तकसीम है उसको बढ़ा दें। तो मनमोहन को इसलिए, अगर मनमोहन आ जाते हैं तो इंडिया के अंदर इस वक्त जो कांग्रेस और बीजेपी में रिफ्ट चल रही है वो और ज्यादा हो जाएगी, और ऑब्वियसली इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल लेक्चर।
I have to offer Maghrib prayer, and time is running out. So it's time to goodbye to all of you. Allah Hafiz.